हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे daffodils poem by William Wordsworth. So this poem is a sonnet. कई बार MCQ में आ चुका है that the poem daffodils is also so the correct answer to that would be a sonnet. The poet of the poem is William Wordsworth. So let's start. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. I wandered lonely as a cloud. Now as अगर आप देखें तो यहाँ पे as का यूज़ किया गया है. So the figure of speech used here is simile. और भी बहुत सारे figure of speech है, like it is a metaphor that floats on high over vales and hills. Now this poem, this line is, next figure of speech is alliteration. Second line जो है हमारी that floats वाली, so this poem is basically an alliteration, right? Now where is the poet wandering? It is wandering high over vales and hills. It basically comes in an MCQ sort of thing. Where is he wandering? When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. So अब यहाँ से question आता है कि what was the color of daffodils? Mostly students write yellow, but the correct answer to that should be golden, right? Now normally जो daffodils होते हैं वो yellow ही होते हैं, but why has the poet used the word golden over here? The correct answer to that is कि they are yellow in color only, but when the sun is shining so brightly, तो जब वो sun की light उन flowers पे पड़ रही है, तो it seems like it is gold in color. So that is why the poet has used the word golden right here. Now next question आता है that where did the poet see the daffodils? So the correct answer to that is again beside the lake, beneath the trees. Beside the lake, beneath the trees. And what were they doing? They were fluttering and dancing in the breeze. Now these two lines, the last and the second last line of the first paragraph, is another figure of speech, that is onomatopoeia, right? Now let us come to the second paragraph. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Now second paragraph, first line, if you see, so there is again a word as, right? So as है तो it is simile. Another figure of speech is that it is alliteration, right? Because alliteration में क्या होता है, बेसिकली उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, वर्ड का फर्स्ट लेटर यूजुअली रिपीट होता है, राइट? सो अगर आप देखें तो इसमें स्टार्स और शाइन का एस एस रिपीट हो रहा है ना, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एज alliteration. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, अब जैसे मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है, राइट? और जिस तरह से मिल्की वे में जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, तो सेम उसी टाइप से जो डैफोडिल्स थे, दे वर ट्विंकलिंग ऑन अर्थ. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे. तो मतलब जहाँ तक पोएट देख पा रहा था सिर्फ डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स थे. यहाँ पे लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ पे थी. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Now in these two lines, first of all क्वेश्चन आता है कि कितने डैफोडिल्स पोएट ने वन गो में देखे हैं. सो द करेक्ट आंसर टू दैट इज 10,000 ही सॉ. एंड व्हाट वर दे डूइंग? दे वर dancing. Sprightly dance means a dance that is full of energy. Now 10,000 saw I at a glance is again a figure of speech, that is hyperbole. Okay, hyperbole में things that are technically not possible or that are practically not possible. Okay, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee.
A poet could not be gay, so now the poet says that the waves beside. Now अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लास्ट लाइन, द लोकेशन इज बिसाइड द लेक, तो अब वहीं से वेव्स आ गई. ओके, so the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. So it seemed that there was a competition, right, in which these daffodils had taken part, right? Now, outdid the sparkling waves in glee. Glee means happiness. Outdid means they were so happy, they were so joyful, you know. Now, outdid the sparkling waves वाली ये जो line है, it is another figure of speech, that is personification, right? A poet could not be but gay. Now, gay means happy. अब एक पोएट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था इस पूरे व्यू को देख के, हो गया था. In such a jocund company. A jocund company means something joyful company or happy company. तो सिर्फ वो था और वो daffodils थे. तो he felt a sort of connection these with him and the daffodils, right? Because beautiful nature is a treasure to all of us. We know this thing, okay? I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. So gazed mean stare करना, घूरना. तो वो देखता गया, फिर उसने सोचा कि ये जो पूरा शो है, ये इसने इस पूरे शो ने उसको क्या ट्रेजर दिया. वेल्थ मीन्स ट्रेजर. A poet is saying that he was charmed. उसके ऊपर ऐसा लग रहा था जादू कर दिया नेचर ने, by the beauty of this amazing nature, right? Now we come on to the last paragraph. When for oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. So जब वो कभी कभी बोर होता, for oft means often, तो कभी कभी जब वो अपनी couch is a kind of long sofa, okay, so कभी कभी जब वो अपनी couch पे ऐसे लेट जाता, vacant मतलब खाली, pensive mood, pensive means sad mood, खाली और sad mood में. तो ये जो उसने पूरा देखा था डैफोडिल्स का पूरा व्यू, ये उसकी इनवर्ड आई, मतलब जैसे कभी कभी हमारी इमेजिनेशन में होता है ना, तो इस टाइप की उसकी इनवर्ड आई में ये चीज़ पूरा आता. एंड विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स हैप्पीनेस ऑफ लोनलीनेस, मतलब अकेले रहते हुए बहुत सारे लोग अपने आप को इंजॉय करते हैं. तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ये सब देख के उसका मतलब उसकी जब इमेजिनेशन में सब कुछ आता था तो वो इतना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था. और फिर उसका जो मन ही मन में लाइक यू नो ही यूज्ड टू स्टार्ट डांसिंग विद द डैफोडिल्स, राइट. अब मैं इसका थीम बता दूँ इस पूरी पोम की. सो बेसिकली देयर आर टू थीम्स. फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन मैन एंड द सेकेंड इज इम्पल्सिव फीलिंग. मतलब किस टाइप से पोएट ने पूरा एकदम यू नो डिस्क्राइब किया है पूरी डैफोडिल्स की व्यू को. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. गुड बाय.